Assalamu alaikum, welcome back. Now we are discussing the text of the Crucible. So as you have heard, Wordsworth says that child is the father of man. So that thing very much fits here. When we look at these children here in the Crucible, so तकरीबन कुछ बच्चियां हैं Crucible में who are aging from 10 to 16, 18. So in teen ages में they are trying to amuse themselves by dancing. So dancing is not permitted by the Puritans, the public, the people of Salem. So these girls, to amuse themselves, they go to the forest nearby. And we already know that jungle or forest, it was considered as devil's abode. मना किया जाता था कि कोई भी इस जगह पे नहीं जाएगा. So what happened here? कि जो बच्चियां थी, they wanted to amuse themselves, so they went to the forest and they danced there. It was very simple dancing. Or even if it was somewhere, we'll be reading that one of these girls was involved in witchcraft. So it was not that horrifying one. So it was just for the sake of enjoyment. So होता क्या है कि these girls, they are detected by Paris, the person, the priest. तो priest उधर से गुजरता है जंगल में और ये देख लेता है उन बच्चियों को डांस करते हुए, जिनमें से एक बच्ची ने अपने कपड़े भी उतारे होते हैं. So this is very a kind of a scene full of violence in his eyes. He comes to get the idea that this is surely done under witchcraft. अब शहर के दो बड़े लोग, जिसमें पैरिस जो कि चर्च का पादरी है और थॉमस पुटनम जो कि एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, इन दोनों की बेटियां भी इसमें शामिल होती हैं. पैरिस की भतीजी एबिगेल भी इसमें शामिल होती है. तो ये बच्चियां खौफ के मारे बेहोश हो जाती हैं. भाग के तो घर आ जाती हैं, लेकिन खौफ के मारे बेहोश हो जाती हैं कि हमारे साथ अब क्या बनेगा. यानी वो सोसाइटी जो कि डांसिंग को परमिट नहीं करती, नॉवल रीडिंग तक को परमिट नहीं करती, वहां पे जब ऐसा डांस किया जाएगा ऐसे वल्गर अंदाज में, और वो भी फॉरेस्ट में जहां पे जाने से मना किया गया, तो बच्चों का बेहोश होना, खौफजदा होना एक नेचुरल एक्सप्रेशन था, एक नेचुरल आउटकम था. सो ये यहां से हम इसको स्टार्ट करें. Reverend Paris is praying now, and though we cannot hear his words, a sense of his confusion hangs about him. He mumbles, then seems about to weep, then he weeps, then prays again, but his daughter does not stir in the bed. So वो रो भी रहा है, परेशान भी है, वो दुआएं भी मांग रहा है, लेकिन उसकी बेटी बेहिस्सो हरकत पड़ी है. The door opens, and his Negro slave Tituba, जिसको ये बारबाडोस से अपने साथ लाया था, brought by Paris with him from Barbados, where he spent some years as a merchant before entering the ministry. He enters as one who does not, as one does, who can no longer bear to be barred from the sight of her beloved, but she is also very frightened because her slave sense has warned her that, as always, trouble in this house eventually lands on her back. So जमाने में स्लेवरी कॉमन थी. सो यहाँ पे बताया गया कि जब वो आती है, उसको प्यार है बेटी से बड़ी मोहब्बत है, उसकी केयर में वो इस रूम में आती है और वो आके उसको देखने की कोशिश करती है कि उसका क्या हाल है. तो इसके साथ साथ उसकी जो स्लेव सेंस है, यानी सिंस शी वाज स्लेव, शी वाज नॉट पेड, शी वाज परचेज्ड. सो जो भी घर में खराबी होती है, गिलास भी टूटता है, तो इल्जाम उसके ऊपर आता है क्योंकि शी इज द मोस्ट वल्नरेबल इन द फैमिली. तो उसकी स्लेव सेंस बता रही है कि सबके ये जो कारनामा किया इन्होंने रात को, इसका इल्जाम डेफिनेटली इसके ऊपर आएगा, और वो मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है. Tituba already taking a step backward. My Betty, be hearty soon. के अब my Betty will be hearty soon should be here. लेकिन ये जो नीग्रोस से, they would never use copulas, और जिसको हम copulas या helping verbs कहते हैं, इसको कहते हैं copula deletion.
Black vernacular English is a term used for them, BVE. ब्लैक वर्नैकुलर इंग्लिश में क्या होता है कि जो लोग, जो ब्लैक्स जो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में सेटल हुए और हु अमेरिका में या इंग्लैंड में जिन्होंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, क्योंकि इनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे, सो दे कुड नॉट यूज द हेल्पिंग वर्ब्स बाय लर्निंग इंग्लिश. पेरिस आउट ऑफ फेयर, पेरिस को पहले गुस्सा था, वो से कह रहा है निकल जाओ यहां से. शुभा बैकिंग टू द डोर, माय बेटी नॉट गोइंग डाई, कि मेरी बेटी मरेगी तो नहीं. Paris, scrambling to his feet in a fury. Out of my sight, she's gone. Out of my. He is overcome with sobs. He clamps his teeth against them and closes the door and leans against it, exhausted. Oh my God, God help me. Quaking with fear, mumbling to himself through his sobs, he goes to the bed and gently takes Betty's hand. Betty, dear child, will you wake? Will you open your eyes, Betty, little one? He is bending to kneel again when his niece Abigail Williams, 17, enters, a striking, beautiful girl, an orphan, with an endless capacity of dissembling. Now she's all worry and apprehension and propriety. So Abigail आती है इतनी देर में, जो कि इसकी भतीजी है. So she is 17, she is beautiful, she is an orphan. क्योंकि ये जो शुरू में हमने डिस्कस किया रिफ्ट्स थे लोकल रेड इंडियंस के इन इंग्लिश सेटलर्स के साथ, उसमें उन्होंने एबिगेल के पेरेंट्स को मार दिया. सो एबिगेल ने बचपन से ही ब्लड शेड देखा था काफी. ये बाकी बच्चों के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसका एटीट्यूड डिफरेंट था, थोड़ी सी मेच्योर थी, और इसके अंदर एक कैपेसिटी थी, एक एंडलेस कैपेसिटी एक्टिंग की, प्रिटेंड करने की. सो शी वाज वेरी प्रिटेंशियस इन अ मैनर. Uncle, he looks to her. Susanna Walcott's there from Dr. Griggs. Susanna Walcott एक और बच्ची थी जो इनके साथ डांस कर रही थी, वो डॉक्टर ग्रिग्स के पास जाती है इंफॉर्मेशन लेने कि बेटी को क्या हुआ. Oh, let her come in, let her. Abigail, leaning out the door to call Susanna, who is down the hall a few steps. Come in, Susanna. Susanna Walcott, a little younger than Abigail, a nervous, hurried girl, enters. Paris, eagerly. What does the doctor say, child? So here he's asking कि डॉक्टर ने क्या हल निकाला. Susanna, carrying around Paris, craning around Paris to get a look at Betty. He bid me come and tell you, Reverend Sir, that he cannot discover no medicine for it in his books. उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि उसे कोई मेडिसिन नहीं मिली जो इसको ट्रीट कर सके. Paris, then he must search on. तो फिर उसे कहो कि पढ़ता रहे, कोशिश जारी रखे. Susanna, aye sir. Yes sir. Aye कहते हैं yes. He have been searching his books since he left you, sir, but he bid me tell you that you might look to unnatural things for the cause of it. Unnatural things means magic. So वो बताना चाह रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तो इसका हल नहीं मिल रहा, लेकिन आप अपने जहन में ये भी रखें कि मे बी ये मैजिक की वजह से हो, मे बी मैजिकल जो स्पिरिट्स है, जो जादू टोना है, इसका रिजल्ट हो कि ये उठ नहीं पा रही. Paris, his eyes going wide. No, no, there will be no natural cause here. Tell him I have sent for Reverend Hale of Beverley, and Mr. Hale will surely confirm that. Let him look to medicine and put out all thoughts of unnatural causes here. There be none. उसे कहो कि ऐसी कोई बात ना करे, इस तरह कुछ भी नहीं है. हेल को मैंने ऑलरेडी बुलाया जो कि कंफर्म करेगा कि कोई जादू टोना यहाँ पे नहीं हुआ. अब ये बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रीस्ट जो है ये पेरिस, ऑलरेडी इसने शुरू में हमें बताया गया कि इसकी दुश्मनी थी, लोग इसे पसंद नहीं करते थे. जो इंडिविजुअल्स थे जिसमें प्रॉक्टर था वो इसके अगेंस्ट से. दे थॉट दैट दिस पर्सन वाज मटेरियलिस्टिक पर्सन, मनी मेकर है, क्योंकि ये एक मर्चेंट था पहले, तो ये इधर भी बिजनेस देखता है, प्रॉफिट देखता है, और ये लोगों से पैसे निकलवाता है. इसीलिए लोगों ने इसके पास, कुछ लोगों ने चर्च में आना ही छोड़ दिया था. अब इसे ये डर है, और एक और रीजन हम बाद में पढ़ेंगे कि इससे पहले किसी और को एक टाउन का एक मुअज़्ज़ज़ बंदा
पटनम जिसकी हमने बात की, जिसकी बेटी भी बीमार है, रुथ नाम है उसका। सो वो, उसका जो साला था वो बनना चाहता था चर्च का प्रीस्ट, जो उसकी जगह एक जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने किसी और को बना दिया। तो अब पेरिस को इस चीज का भी खतरा है कि मैं प्रीस्ट हूं, लोग पहले मेरे अगेंस्ट है, और अगर उन्हें पता लगा कि मेरी अपनी फैमिली इस चीज में इन्वॉल्व है विच क्राफ्ट में, तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ पेरिस ने ये सीन देखा था अपनी आंखों से। बाकी जो टाउन में अफवाहें फैली वो इन बच्चियों के थ्रू फैली जो वहां पे डांस कर रही थी। पेरिस को अपना लाला पड़ा हुआ है, अपने लाले पड़े हुए हैं, डर पड़ा हुआ है कि कल को मैं एक्सपोज हो गया कि प्रीस्ट की बेटी विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, तो मुझे तो कोई यहाँ पे नहीं रखेगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि डॉक्टर को कहो कि इस तरह की बातें ना करे, मैं अपने तौर पे देख रहा हूं कि आगे क्या चल रहा है। I sir, he bid me tell you. She turns to go. Abigail, speak nothing of it in the village, Susanna. किसी से बात ना करना. Paris, go directly home and speak nothing of unnatural causes. Aye sir, I pray for her. She goes out. ये मना करे लेकिन टाउन में ऑलरेडी अफवाह फैल चुकी है. Uncle, the rumor of witchcraft is all about. I think you would best go down and deny it yourself. The parlor's packed with people, sir. I'll sit with her. कि विच क्राफ्ट की रूमर हर जगह पे है, आपको खुद जाना चाहिए नीचे और डिनाई करना चाहिए। जो पॉलर है, पॉलर मींस वो चर्च का एरिया जहाँ पे लोग बैठते हैं इबादत के लिए, वो भरा हुआ है लोगों से, और लोग तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि क्या हुआ। तो मैं बैठती हूँ बेटी के पास, आप जाके लोगों से बात करो। Paris pressed turns on her. And what shall I say to them? That my daughter and my niece I discovered dancing like heathen in the forest? मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैंने अपनी बेटी और अपनी भतीजी को देखा कि वो काफरों की तरह डांस कर रहे थे जंगल में, ये बताऊं? Abigail, uncle, we did dance. Let you tell them I confessed it, and I'll be whipped if I must be. But they are speaking of witchcraft, but it's not witched. कि अंकल हमने डांस किया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इस चीज को अपने जेहन में रखना है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये मैंने बात की थी आपसे, वो प्रूव होगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये बच्चियां डरी हुई हैं। एबिगेल इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि वाकई मैंने डांस किया है, और उसके लिए अगर मुझे कोड़े मारे जाएंगे तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन ये लोग डांसिंग को विच क्राफ्ट का नाम दे रहे हैं, जो कि नहीं हुआ। बेटी के ऊपर कोई विच क्राफ्ट का असर नहीं है। Paris. Abigail, I cannot go before the congregation when I know you have not opened with me. What did you do with her in the forest? क्या Abigail, मैं इस जुलूस के सामने नहीं जा सकता जब तक तुम मुझे क्लियर ना बताओ। तुम बताओ कि फॉरेस्ट में क्या हुआ। Abigail, we did dance, uncle, and when you leaped out of the bush so suddenly, but he was frightened and then she fainted, and there's the whole of it. कि हम डांस कर रहे थे, अब अचानक आए, वो डर गई, यही हुआ बस। Child, sit you down. Abigail, quavering as she sits, I would never hurt Betty. I love her dearly. मैं क्यों इसे नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं तो प्यार करती हूँ उससे। Now look, you child. Your punishment will come in its time. कि जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी है। But if you traffic with spirits in the forest, I must know it now. For surely my enemies will, and they will ruin me with it. कि अगर कहीं से भी थोड़ा सा मैजिक, डेविलिश आर्ट्स इन्वॉल्व है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि तुम नहीं बताओगी तो मेरे दुश्मन बता देंगे और मुझे तबाह कर देंगे। Abigail, but we never conjured spirits. हमने कोई spirits नहीं बुलाई, हमने कोई जादू नहीं किया। Then why can't she not move herself since midnight? तो फिर ये क्यों नहीं हिल रही, ये क्यों ऐसी पड़ी हुई है? This child is desperate. ये बहुत critical condition में है। Abigail lowers her eyes. It must come out. My enemies will bring it out. Let me know what you've done here. Abigail, do you understand that I have my many enemies? कि तुम्हें तो पता ना मेरे दुश्मन हैं। I have heard of it, uncle. This is a faction that is sworn to drive me from my pulpit. Do you understand that? Pulpit कहते हैं रोस्ट्रम, यानी चर्च की मिसाल दे रहा है कि एक तबका ऐसा है इस जगह पे जो मुझे इस मिनिस्ट्री से हटाना चाहता है, और तुम्हें तो पता होना चाहिए इस बात का। I think so, sir. Now then, in the midst of such disruption, my own household is discovered to be the very center of some obscene practice. Abominations are done in the forest.
कि पहले लोग मेरे खिलाफ हैं, और उसके बीच में मेरा अपना घर डिस्कवर हो गया कि विच क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व है, और बहुत गलीज हरकतें हो रही हैं जो कि उस जगह पे चर्च फॉरेस्ट के अंदर हो रही थी। इट वॉज स्पोर्ट अंकल, हम सिर्फ खेल रहे थे। पॉइंटिंग एट बेटी, यू कॉल दिस स्पोर्ट? ये खेल खेल रहे थे कि वो उठ नहीं पा रही। शी lowers her eyes. He pleads, Abigail, if you know something that may help the doctor, for God's sake, tell it to me. She's silent. I saw Tituba waving her arms over the fire when I came to you. Why was she doing that? And I heard a screeching and gibberish coming from her mouth. She was swaying like a dumb beast over that fire. अब यहाँ पे जो माहौल बन रहा है वो माहौल तो ऐसे ही बन रहा था कि विच क्राफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन फायर किए हुए थे, उन्होंने आग जलाई हुई थी। टिट्यूबा सिर्फ वहां पे अपने बारबाडोस के गाने गा रही थी, उस जो अफ्रीकन लैंग्वेज में। अब अफ्रीकन लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, तो इनको लगता था कि शायद जादू मंत्र पड़ रही है। ऊपर से वो ब्लैक थी, ऊपर से जो फायर का जो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ा था, शेडोज बन रहे थे, वो बड़ा एक जादुई किस्म का माहौल बन रहा था। तो वो कह रहे वो क्यों कर रही थी इस तरह? Abigail, she always sings a Barbados songs and we dance. वो हमेशा अपने गाने गाती है और हम डांस करते हैं। यानी शी एक्सेप्ट्स कि ये पहली दफा नहीं हुआ, हम हमेशा ऐसा करते हैं, कई दफा किया। I cannot blink what I saw, Abigail, for my enemies will not blink it. Blink here means ignore. जो मैंने देखा मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे एनिमीज इग्नोर नहीं करेंगे। I saw dress lying on the grass. एक लिबास भी ग्रास के ऊपर पड़ा था। Abigail, innocently, a dress, क्योंकि उसके पास पावर है बिहेव करने की, कि जिस तरह वो इसमें लाइक प्रिटेंड करने की। सो शी नोज बट शी इज प्रिटेंडिंग। A dress. It is very hard to say. A dress. And I thought I saw someone naked running through the trees. और जब मैं आया तो मुझे लगा कि शायद कोई बेलिबास वहां पे भाग रहा है। Abigail in terror. No one was naked. You mistake yourself, uncle. कोई भी ऐसा नहीं था, आपको गलती हुई है। With anger, I saw it. He moves from her, then resolved. Now tell me true, Abigail, and I pray you feel the weight of truth upon you. For now my ministry is at stake. My ministry and perhaps your cousin's life. क्योंकि दो चीजें दाव पे लगी, मेरी मिनिस्ट्री और तुम्हारी कजन बेटी की लाइफ। Whatever abominations you have done, give me give me all of it now, for I dare not to be taken unaware when I go before them down there. कि मैं चाहता हूं कि मुझे हर चीज का पता हो जब मैं उनके सामने जाऊं, और तुम मुझे बताओगी कि क्या क्या हुआ, ताकि मैं इल इन्फॉर्म्ड ना हूं, मुझे सब पता हो। Abigail, there's nothing more, I swear it, uncle. Paris studies her, then nods, half convinced. तू इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है कि इसको थोड़ा सा यकीन हो जाता है। Abigail, I have fought here 3 long years to bend these stiff-necked people to me. And now, just now, when some good respect is rising for me in the parish, you compromise my very character. कि 3 साल लगे मुझे इन लोगों को झुकाने में, जिनकी गर्दन में सरिया था, जो प्राउड थे, जो एरोगेंट थे, और अब जब वो कुछ मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुमने मेरा कैरेक्टर दाव पे लगा दिया। आई हैव गिवन यू अ होम चाइल्ड, आई हैव पुट क्लोथ्स ऑन योर बैक, नाउ गिव मी अप राइट आंसर। मैंने तुम्हें जगह दी रहने की, तुम्हारे ऑर्फन होने के बाद तुम्हें कपड़े दिए, अब मुझे सही जवाब दो। योर नेम इन द टाउन, इज इट एंटायरली वाइट, इज इट नॉट? कि तुम्हारा नाम जो है इस शहर में, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तुम्हारी रेप्यूटेशन ठीक है? क्या उस पर कोई इशू तो नहीं है? With an edge of resentment, Abigail, why, I'm sure it is, sir. There be no blush about my name. मुझे यकीन है और मेरे नाम पे कोई धब्बा नहीं लगा हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Paris to the point. Abigail, is there any other cause that you have told me for your being discharged from Goody Proctor's wife, or Goody Proctor's service? I have heard it said, and I tell you as I heard it, that uh, she comes so rarely to the church this year, for she will not sit so close to something soiled. What signified that remark?
क्योंकि अब वो चर्च में भी नहीं आती। हस्बैंड वाइफ बहुत कम आते हैं चर्च में, तो क्या रीजन हो सकती है? नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे अब ये जो मूवी है द क्रूसिबल, दिस इज वेरी गुड मूवी, यू कैन वॉच इट। ये एबिगेल का कैरेक्टर है जो कि जिसने परफॉर्म किया, सो यू मस्ट गो थ्रू इट। अब यहाँ पे वी कम टू नो कि गुडी वर्ड यूज हुआ। गुडी इज यूज्ड फॉर मिसेस। गुडी प्रॉक्टर मीन्स मिसेस प्रॉक्टर, गुडी पटनम मीन्स मिसेस पटनम, गुडी खोरे मीन्स मिसेस खोरे, in this way. Abigail, she hates me, uncle. She must, for I would not be her slave. It's a bitter woman, a lying, cold, sniveling woman, and I will not work for such a woman. कि जो प्रॉक्टर की वाइफ है एलिजाबेथ, यानी गुडी प्रॉक्टर, वो झूठी है, वो मेरा नाम खराब कर रही है, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है, सर्वेंट नहीं, तो मैं ऐसी औरत की गुलामी नहीं कर सकती। She may be, and yet it has troubled me that you are now 7 months out of the house, and in this time no other family has ever called for your service. कि 7 महीने हो चुके हैं तुम्हें गुडी प्रॉक्टर ने घर से निकाला, लेकिन उसके बाद अभी तक तुम्हें किसी ने अपने घर पे काम नहीं दिया, तो क्या रीजन है? दे वॉन्ट स्लेव्स नॉट सच एज आई, उनको गुलाम चाहिए, मेरे जैसा बंदा नहीं। लेट देम सेंड टू बारबाडोस फॉर दैट, उन्हें भी अपनी तरह बारबाडोस भेज दो, जिस तरह तुम ट्यूबा को लेके आए वो भी कोई ले आए। आई विल नॉट ब्लैक माई फेस फॉर एनी ऑफ देम with ill-concealed resentment at him. Do you begrudge my bad uncle? क्या आपको इस चीज की तकलीफ है कि मैं आपके घर में रहती हूँ? No, no. In a temper. My name in village. My name is good in the village. I will not have it said my name is soiled. Goody Proctor is a gossiping liar. Goody Proctor झूठी है, झूठ बोलती है, और मेरा नाम बिल्कुल ठीक है, और मैं इसके ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब यहाँ पे क्या बेसिकली जो एबिगेल है, शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद प्रॉक्टर द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट के साथ इसका एक अफेयर था, और ये अफेयर एक ऑलमोस्ट सेक्सुअल लेवल का था। तो जब उसकी वाइफ को इस चीज का पता चलता है, गुडी प्रॉक्टर को यानी एलिजाबेथ को, तो वो इसको घर से निकाल देती है। और तब से लेके अब तक इनका आपस में एक यानी हस्बैंड एंड वाइफ, प्रॉक्टर एंड मिसेस प्रॉक्टर, वो उस अच्छे लेवल पे नहीं आ सके, उसका ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं हो सका दोबारा अपने हस्बैंड पे। बड़ा कोल्ड सा एटीट्यूड है उसका अपने हस्बैंड को लेके। हालांकि प्रॉक्टर जिसने गलती की तब एबिगेल से अफेयर करके, अब वो ये सब कुछ छोड़ चुका था, तो वो अपनी वाइफ के साथ सिंसियर था, लॉयल था। और एक चीज थी कि वो नहीं चाहता था कि इस अफेयर का कहीं पे पता चले, क्योंकि वो सोसाइटी जो कि डांस करने पे कोड़े मारती थी, जो कि नॉवल पढ़ने पे कोड़े मारती थी, उस सोसाइटी के लिए एक इलिसिट रिलेशंस, एक सेक्सुअल रिलेशंस, ये तो बहुत बड़ी बात थी, जिसपे शायद वो मौत के घाट उतार देते। सो इसलिए एबिगेल और प्रॉक्टर इनको इस चीज का डर भी था, और इसलिए एबिगेल एक्सेप्ट नहीं कर रही कि उसे असल में क्यों निकाला गया Elizabeth Proctor के घर से। So this is all for today. In next, we'll be continuing the text further.